ओके, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट सेशंस। तो जैसे कि हम लोग पहले भी 2 सेशन कंप्लीट किए थे, आज नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग कुछ छोटा-छोटा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज भी आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द गैप ऑफ रिसोर्स इन ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट के ऊपर ही टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक हम लोगों ने जो पिछले सेशन में किया था उसका ही थोड़ा आगे का वर्जन है। इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप के ऊपर ही बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप का कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी हम लोग कुछ-कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे टारगेट मस्ट मार्केट एंड कस्टमर इनसाइट्स। What is the size of our target market? How many potential customers are there? Do we have all developed customer personas? What key consumer trend to do we observe? How do we identify and differentiate new target segments? Geographic and demographic analysis. Which locations currently provide most of our customers? Which geographic areas are growing? Are the demographics of growth market like our current markets? Should we adjust our strategies for new demographics? Online presence and competitors. Is online commerce a growth opportunity? Are competitors active online? Can we find marketing partners to expand our reach? Next, value and pricing strategy. How do we create more value to justify our price? How can you position and product as premium? How do our prices compare to competitors? Are our prices profitable and sustainable? Next, customer feedback and market fit. How do how often do sales and support staff hear pricing objections? Are we targeting enough customers who can afford or want our product? Are our new product or service unique? What is our value proposition? How can we effectively communicate it? How do customers currently solve the problems our product address? What product do competitor offer and how are they perceived by the market? Next is operational and technological consideration. How do competitors deliver their services? Are there technological solutions to improve our operation to or reduce cost? Are we prominent in search engine for relevant queries? Do we have a content market plan to improve such visibility? By addressing these questions, entrepreneur can effectively identify the gaps and opportunities to optimize their business strategies and resources. तो ये क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करें, then we can easily mitigate the identification gap and opportunities to optimize their business strategies and resources. Next is gap model and service quality. सॉरी, यहाँ पे एक दी होगा, ठीक है, जो मिस हो गया है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक लिख देना दी गैप मॉडल। तो दी गैप मॉडल helps entrepreneurs identify service quality gaps to improve customer satisfaction. Here are the 5 key areas. जैसे पहले में आ जा रहा है क्या, गैप बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट ऑकर्स, इसका कुछ कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। ऑकर व्हेन मैनेजमेंट मिस इंटरप्रेट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सॉल्यूशन क्या है इसका, कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च, कस्टमर पैनल, satisfaction survey and comprehensive studies. Next, gap between management perception and service quality specification occur when management understands customer expectation but fails to set appropriate performance standards. Solution के अंदर क्या आएगा, define clear service levels, develop standard operating procedures, establish smart goal, right? Next, gap between service quality specification and service delivery occur when the actual service provided does not meet the specific standards. Solution क्या है इसका, audit customers, audit the customer experience, provide additional training, review hiring practices. Next, gap between service delivery and external communication occur when company advertised service do not match the actual service provided. Solution क्या आएगा इसका, ensure advertising materials are accurate and regularly reviewed. Gap between expected service and experienced service occur when customer expectations influenced by various factors are not met by the actual service. Solution क्या आएगा इसके अंदर, manage customer expectations through honest communication, consistent service delivery, resource management at optimized cost. तो दीज आर दी गैप्स, राइट। नेक्स्ट आ जा रहा है हम लोगों का इंपॉर्टेंस क्या है रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्या क्या इंपॉर्टेंस है रिसोर्स मैनेजमेंट का ना, ऑर्गेनाइज कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा फॉर इफेक्टिव आउटकम्स, अलाइन रिसोर्स एलोकेशन विद स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू एडिशन। की फोकस एरिया के अंदर क्या आएगा, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, ऑटोमेशन इज देयर, मिनिमाइज वेस्ट इज देयर, मैक्सिमाइज थ्रूपुट इज देयर। नेक्स्ट इज गार्टनर इनसाइट, prioritize initiatives, prevent resource overload, promote flexible completion to maximize value, right? Next steps क्या है, optimize resource allocation, that is important for exam point of view.
तो अगर आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जाग रहा है तो ये वाला टॉपिक अच्छे से देख के जाना। स्टेप्स क्या है फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, जैसे अलाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू स्ट्रेटेजी, कंप्रिहेंसिव कॉस्ट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑफ एसेंशियल कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन, यूज टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैनेजमेंट टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट, cost optimization, direct business transformation to sustain resource efficiency. Type of resource management, strategic resource management, maximize usage of high demand resources, meeting project deadlines, ensure projects stay on track by effective resource planning, future roofing resources, upgrade or replace resources as needed. Benefit of resource management, avoid resource issues, identify gap and plan accordingly. आइडेंटिफाई गैप के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोग 2-3 बार रीड कर लेंगे आई होप यू विल बी एबल टू क्लियर दिस थिंग्स. Prevent over allocation, schedules resources to avoid bottlenecks, create team transparency, allow open access to resource for better team performance. Tools and techniques. Resource forecasting is the thing, but estimate required resource based on project scope. Resource allocation. Assign resource based on availability and skill. Resource leveling. Assess team skills for better resource assignment. And resource utilization. Track and adjust resource uses of efficiency. Usage for efficiency. Next is resource management life cycle. Resource planning. Estimate resource needed for task, resource scheduling, align resource availability with project schedule, and resource allocation. Continuously select the right resources for the task. तो इसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्टेप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन. तो इसी के साथ मेरा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो रहा है, जो कि बहुत ईजी है, उतना कुछ खास नहीं है, बट लास्ट का ये जो मैंने हाईलाइट किया दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्या कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट. तो ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट इसके ऊपर डिस्कस किया गया है. इसको हम लोग आराम से करते हैं एंड समझते हैं चीज़ों को. पहले कैपिटल स्ट्रक्चरिंग. कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस अ बिजनेस वेंचर, जो हम लोगों ने एफएम में भी किया है, राइट. एसएफएम में भी इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी है फाइनल में, और इंटर में एफएम में भी इसके ऊपर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर हम लोग बहुत सारे चैप्टर किए हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर ही है. इक्विटी फाइनेंसिंग, debt financing, permanent source of capital provide financial flexibility. Debt financing, finite to maturity, legal obligation, involve certain cash outflow. Factors affecting capital structuring. Company life cycle, evolve time. Companies evolve from cash consumed to cash generators. As company grow, business risk decreases and debt capacity increases. Cost of capital, optimal capital structure balance benefit and cost of leverage. Benefit of high leverage, tax deductibility of interest, lower cost of debt relative to equity, cost of higher leverage, increased risk for capital providers, potential cost of financial distress, use of leverage. Management consider practical factors in leverage decisions. Leverage decisions are influenced by market conditions and company strategy. Next, consideration of stakeholder interest. Decision aim to maximize shareholder value. Potential conflicts with interest of other stakeholders, debt holders, supplier, customers, employees. रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज देयर. रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या आएगा, बैकबोन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स involves mobilizing human, social, financial, and other form of capital. Entrepreneurs exploits opportunities to sell product, service at a profit. Involves optimizing and recombining financial capital, human capital, social capital. टाइप ऑफ कैपिटल के अंदर क्या आएगा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर आएगा आइडियाज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, स्टोरीज, एजुकेशन एक्टिविटीज. ह्यूमन कैपिटल के अंदर आएगा टैलेंट, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटी. फाइनेंशियल कैपिटल, ये सब डिस्कशन बहुत ईजी है, तो मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दे रहा हूँ. जहाँ पे मुझे लगेगा कि टाइम देना जरूरी है आई विल गिव दैट मच ऑफ टाइम. ओके, सो जस्ट लिसन ऑल दिस थिंग वेरी केयरफुली, एंड अगर आप इसके बाद एक बार रीड कर लेंगे जो मैं बार बार पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ, देन आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी होगा इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना. नेक्स्ट, फाइनेंस कैपिटल, रेवेन्यू, डेट, इक्विटी, ग्रांट फाइनेंसिंग. नेटवर्क कैपिटल, करेक्टनेस, रिलेशनशिप, बॉन्डनेस. कल्चरल कैपिटल, एटीट्यूड्स, माइंडसेट, बिहेवियर, हिस्ट्री, इंक्लूसिव ऑफ लव, लव ऑफ प्लेस. फिजिकल कैपिटल, डेंसिटी, क्वालिटी ऑफ प्लेस, फ्लूइडिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर. इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, सिस्टम ऑफ लॉ, फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, मार्केट, स्टेबिलिटी. रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, सेंट्रल
actor in resource accumulation, links and utilize resource to exploit business opportunities, resource mobilization and management, stages of resource mobilization, resource identification, recognizing available resources, financial, human, social, etc., resource acquisition, securing necessary resource through investment, loan, and partnership, resource organization, arranging and structuring resource of efficiently, resource utilization, applying resources effectively to exploit business opportunities, resource optimization, ensuring resources are used in the most productive manner, resource monitoring, regularly checking and adjusting resource use to maximize efficiently, management. Management must handle various aspects of management for effective enterprise operation. Unit size and install capacity इसके अंदर आ जाएगा. Deciding on the scale and capacity of the business unit, machinery requirement and technical know-how, identifying necessary equipment and acquiring technical expertise, technical training, ensuring staff are properly trained in technical aspects, quality control system, implementing and understanding quality control measures, staff requirement, determining the number and type of staff needed, cost of maintenance, assessing ongoing maintenance cost for equipment and facility, after sale service, providing support services including spare part availability, depreciation of asset, understanding the depreciation rate and impact of the asset, raw material requirement, identifying and securing necessary raw materials, supply chain management, ensuring